Yashita and welcome back to my channel. So I wanted to share with you guys my little bag collection. Let me just tell you beforehand, अगर आप expect कर रहे हो कि ऐसे कुछ designer handbags दिखाने वाली हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है. I haven't purchased any designer bag yet, but my plan is whenever I'm gonna purchase a designer bag, the first one is gonna be for my mom. But in today's video, I'm gonna be sharing with you guys almost all of my bags. I'm showing you guys my most favorite ones, my most used ones, and some of my recent purchases as well. So if you're interested, please keep on watching this video. But before we get started with today's video, if you haven't subscribed to my channel yet, please अभी जाके सब्सक्राइब करो and also hit the bell notification so you get notified every time I upload a new video on YouTube. You can also follow me on my Instagram. This is my Instagram handle, and yeah, now let's get started with today's video. Alright, so I'm going to start with the bigger bags first. So the first one here is this backpack. So this one is from the Kendall and Kylie's collection. I got this in January. मुझे मुंबई जाना था and that's why I needed a big backpack जिसमें मैं अपना लैपटॉप भी कैरी कर सकूं. तो ये बैकपैक बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, इसको मैंने इसीलिए लिया है. एंड जब भी ट्रैवल करने जाओ यू नीड अ सॉलिड बैकपैक जिसमें आप अपने बहुत सारी चीज़ें डाल लो. सो या आई गॉट दिस फॉर दैट रीज़न. सो दिस बैग हैज़ टू कंपार्टमेंट्स. एक है सबसे बड़ा वाला कंपार्टमेंट जिसमें लिटरली यू कैन स्टोर एनीथिंग. आई फाइंड दिस वेरी वेरी स्पेशियस. एंड द सेकेंड वन इज़ अ छोटू कंपार्टमेंट जिसमें आप अपना वॉलेट और ऐसी एसेंशियल चीज़ें ID वगैरह रख सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आई रियली लाइक द होल स्ट्रक्चर of this bag. It's very sturdy. It's a very good quality bag. I think I got this for somewhere around 1500 to 2000 rupees. I really don't remember the exact prices of all these bags. तो मैं सर्च करूँगी और मुझे मिल गया तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी एग्जैक्ट प्राइस. बट या आई थिंक इसके प्राइस के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा वर्थ है. आई गॉट दिस फ्रॉम शॉपर्स टॉप स्टोर. ओके, सो नेक्स्ट आई हैव दिस ब्राउन टोट बैग एंड आई थिंक ये मेरे पास एक लौता ब्राउन बैग है मेरे पूरे कलेक्शन में. नाउ आई गॉट दिस वन फ्रॉम द स्ट्रीट स्टाइल स्टोर. नाउ यू गाइज आई थिंक यू मस्ट नो कि स्ट्रीट स्टाइल स्टोर में बहुत अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती है. अफोर्डेबल फुटवेयर भी मिल जाते हैं. आई थिंक अब क्लोथिंग भी मिलती है एंड बैग्स भी मिलते हैं. सो आई गॉट दिस अ लॉन्ग टाइम बैग. I don't even remember कब लिया है मैंने. I think 2 years 3 years ago. So it has enough space to carry your books and that's it. It also comes with this sling strap जिसके बिना ही मैं इसको यूज करती हूँ. मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है. And then इसमें again you have got 2 compartments, one in the front and a little back pocket. Okay, so the next one is again a tote bag. Now this one is much bigger than the previous one and this one is of course in black color. Now मुझे एक classic black tote चाहिए था. So I got this from the Spoil app. I don't know ये कौन से brand का है exactly, but I got this at a very affordable price. I think I got this for 1000 rupees. Quality of this bag is okay. To be honest, अभी तक मैंने इसको इतना यूज नहीं करा है. This one has only one compartment, ये बीच में एकदम बड़ा वाला, and other than that it has 2 pockets in the front. Moving on to the next backpack. Now ये मैं इसकी सिर्फ मेमोरी की वजह से दिखा रही हूँ. This has to be my most used bag ever. So I got this in my first year of college and yeah, this is a 3 years old bag and I got this off Amazon for only 1000 rupees guys. और ये अब तक इतने अच्छे से चला है ना, मैं क्या बताऊँ, इसके एकदम पैसा वसूल हो चुका है. क्लासिक ब्लैक बैकपैक बहुत मुझे लगता है हर आउटफिट के साथ चल जाता है. That's why I got this one. Yeah, as I told you guys, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी चली है. अब इतना पुराना हो गया है तो ये थोड़ा सा वेयर ऑफ हो रहा है. आई थिंक अब इसको गिव अप करने का टाइम आ गया. I should buy a new black backpack. I'm gonna miss this bag, but I have used this bag the most. Okay, so now let's move on to the smaller bags, the handbags and the sling bags. मैं आपको अपने सारे backpacks नहीं दिखा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. Okay, so one of my absolute favorite handbags is this one, this white one. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. I got this on my birthday last year from Forever 21 for 2000 rupees and it's a really nice handbag. ये मेरे almost सारे आउटफिट्स के साथ चला जाता है. एंड लास्ट ईयर लिया था और उसके बाद मैंने इसको काफ़ी यूज़ करा है. मेरे बहुत सारे पिक्स में भी आपने अगर नोटिस किया होगा तो यही हैंडबैग होता है. एंड इट ऑफ कोर्स कम्स विद अ लॉन्ग स्ट्रैप एज वेल, तो इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड ऐसे भी थोड़ा क्लासिक लगता है. इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है. मतलब इसमें मैं काफ़ी कुछ स्टोर कर सकती हूँ. इट इज़ लाइक द परफेक्ट साइज टू टेक ऑन इवेंट्स जिसमें मतलब कुछ
कुछ कुछ ले जाना होता है यू नो, तो उसमें मैं बहुत कुछ स्टफ करके ले जाती हूँ ऑनेस्टली। वाइट बैग्स को मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट आई थिंक 1 साल के अंदर मैंने इसको अच्छे से मेंटेन किया है, अभी भी इतना ऐसा कुछ पुराना नहीं लग रहा। सो द नेक्स्ट वन इज दिस ब्लैक स्लिंग बैग। नाउ इसको मैं ऐसे कोई फैंसी पार्टीज या इवेंट में नहीं ले जाती। एज यू कैन सी ये बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल सा ब्लैक स्लिंग बैग है। हर लड़की के पास एक ऐसा ब्लैक स्लिंग बैग होता ही है, तो इसको यू नो कैजुअली जब कहीं ऐसे ही जाना होता है तो मैं इसको कैरी कर लेती हूँ। आई गॉट दिस वन फ्रॉम मिनीसो में बहुत वैरायटी ऑफ बैग्स मिल जाते हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो आई थिंक मैंने इसको 2 साल पहले लिया होगा, ये अब तक डिसेंटली चल रहा है। आई थिंक इसमें मैंने ग्रे कलर भी लिया है, वो भी है। मिनीसो से भी मैंने काफ़ी बैग्स लिए हैं, मैं वो सारे नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि या बट या दिस वन इज़ लाइक माई मोस्ट यूज स्लिंग बैग, क्योंकि अगेन हर आउटफिट के साथ चला जाता है और जल्दी में अगर आपको कहीं निकलना है तो आप इसमें अपना वॉलेट फ़ोन लेके तुरंत निकल सकते हो। सो या माई नेक्स्ट बैग इज़ माई prized possession. So this is this really beautiful pearl bag. Now I got this I think last year only, and I got this off Shein for 1200-1500 bucks. I don't know, I just love this bag. It's so beautiful. It's so delicate. I think ये बैग से ज़्यादा it's like a decoration, you know, वॉल पे भी अच्छा लगेगा मैं टांग दूँ तो, बट ये मेरे आउटफिट को बहुत ड्रेसियर कर देता है, बहुत इवेंट टाइप के कर देता है, यू नो, इट्स जस्ट वेरी ट्रेंडी एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल पीस. सो या आई रियली लव इट. ओके, सो द नेक्स्ट बैग इज अगेन अ वेरी ट्रेंडी chic बैग. नाउ आई फॉरगॉट कि स्टाइल को क्या बोलते हैं, बट दिस इज लाइक द क्रोकोडाइल प्रिंटेड और टेक्सचर्ड काइंड ऑफ बैग. नाउ ब्लैक हमेशा सारे आउटफिट्स के साथ अच्छा लगता है, एंड आई गॉट दिस अगेन फ्रॉम Shein. मैंने इसको अपने हॉल में भी दिखाया था. आई हैव फॉरगॉटन द प्राइस. आई डोंट थिंक इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. इट्स अ वेरी 90s chic kind of a style and I really love it. Okay, so the next one that I have here is this one. This is again from Forever 21 and it's from the Kendall and Kylie's collection. Now the thing about this bag was कि originally बहुत expensive था. I think this was for 3000 rupees, but I did not get it back then. फिर मैं रैंडमली एक दिन शॉपिंग कर रही थी और फिर मुझे ये एक लास्ट पीस मिला एंड दिस वन हैड लाइक 50% ऑफ, तो ये मुझे 1500 में मिल गया एंड आई वॉज रियली हैप्पी. सो या आई लव द कलर ऑफ दिस बैग. ये किसी भी बोरिंग आउटफिट में एक पॉप ऑफ कलर ले आता है. आई लव दिस. अगेन इट हैज़ दिस क्रोकोडाइल काइंड ऑफ टेक्सचर जैसे लास्ट बैग में था. अगेन हैज़ अ सिंगल कंपार्टमेंट एज मोस्ट ऑफ माई बैग्स एंड दिस अगेन कम्स विद दिस स्ट्रैप विच इज डिटैचेबल एंड इट इज़ ऑल्सो एडजस्टेबल. So yeah, I really like this bag. मैं almost सारे bags के लिए बोल रही हूँ, but yeah, I love my bag collection. Moving on to the next bag, this one again is a sling bag and ये बहुत ज़्यादा unique piece है. Again, this one is a straw detailed bag. ये भी बहुत ज़्यादा trend में था last year तक. I think it is still in trend. I don't know. I just really love it. ये beach वाले vibes देता है, vacation vibes. And I think I got this from Globus, if I'm not wrong. Totally forgotten the price. I think this one must be for 1500,000 rupees. इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो एक बॉक्स की तरह है. It is literally a box. So yeah, I think it's a very trendy and a very unique piece that I have and I would love to take it on a vacation, पर Corona. While we are talking about straw handbags, this is the next one. This is again a straw detailed sort of bag. I got this from Shein very recently. मतलब ऑर्डर पहले कर दिया था बहुत, पर अब डिलीवर होना स्टार्ट हुआ है. So yeah, this is again a very beachy sort of a bag. बहुत अच्छा लगेगा किसी भी beach sort of outfit के साथ. I think वैसे भी अच्छा लगेगा, but I have not used this as of now. It has again one single compartment and I love the color, of course, the pastel blue color, my favorite. So the next bag is this bum bag. ये बहुत ज़्यादा trend कर रहा था last year. मैंने भी लिया था इसीलिए. I got this off Amazon and मुझे बहुत अच्छी डील पे मिल गया था. अगर ये अभी भी Amazon होगा तो मैं लिंक कर दूंगी. एंड सरप्राइजिंगली द क्वालिटी वाज वेरी नाइस. अभी तक मतलब मैंने इसको लास्ट ईयर बहुत यूज करा है एंड इसका एकदम वैसे का वैसा ही है जैसा आया था. दिस अगेन इज लाइक अ सिंगल जिपर थिंग. इसके अंदर मैंने बहुत रैंडम चीजें अभी तक रखी हुई है. एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू योर वेस्ट साइज. इसको मैंने हमेशा क्रॉस बॉडी करके ही पहना है. And yeah, so now coming to the last couple of bags and these are the most tiny handbags that you can find, जो अभी बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड में है.
सो ये मैंने शीन से ऑर्डर किया था काफ़ी टाइम पहले, पर ये अब डिलीवर हो रहे हैं. सो द फर्स्ट वन इज दिस रियली क्यूट नियॉन वन. आई मीन लुक एट द साइज, इट्स लाइक अ बेबी बैग. इट्स वेरी क्यूट, नॉट वेरी प्रैक्टिकल ऑफ कोर्स. इसमें आई डोंट नो, आई थिंक इसमें मेरी बस एक लिपस्टिक और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फ़ोन आ पाएगा, बट स्टिल इट इज़ सो क्यूट. अगेन मुझे ऐसे ब्राइट कलर्स अच्छे लगते हैं बैग्स में, क्योंकि वो आउटफिट में एक पॉप ऑफ कलर ले आते हैं. एंड द नॉट डिटेल ऑन दी हैंडल, आई थिंक इट्स सुपर क्यूट. नाउ दिस बैग कम्स विद दिस डिटैचेबल चेन, गोल्डन चेन, विच इज़ अगेन ऑफ अ रियली गुड क्वालिटी. बहुत टैकी सा नहीं लग रहा है, बट आई थिंक मैं इसको बिना चेन के ही यूज़ करने वाली हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड टू स्टाइल इट विद डिफरेंट आउटफिट्स एंड एवरीथिंग. अभी इस आउटफिट के साथ भी कितना अच्छा लग रहा है. आई थिंक आई एम गोना डू अ लिटिल फोटो शूट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लिटिल हैंड बैग. दिस वन इज अगेन अ नियॉन. दिस वन इज इन द नियॉन पिंक कलर. ये वाला तो आई थिंक नियॉन वाले से भी बहुत छोटा है, बट इट इज सो क्यूट एंड इट लुक्स रियली नाइस. द क्वालिटी इज सुपर नाइस. इट्स वेल स्ट्रक्चर्ड. इसके ऊपर आई थिंक फिश स्केल्स वाला टेक्सचर दिया हुआ है. एंड दिस वन ऑल्सो कम्स विद अ लिटिल स्ट्रैप, तो आप इसको स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकते हो. आई रियली लव इट. बहुत अफोर्डेबल है, बहुत क्यूट है और बहुत ट्रेंडिंग पीसेस हैं. द लास्ट पीस इज अगेन फ्रॉम माई टाइनी हैंड बैग कलेक्शन. दिस वन इज इन दिस ब्यूटिफुल लैवेंडर शेड. आजकल मेरा पैस्टल पिंक से ज़्यादा लैवेंडर फेवरेट होने लग गया है, एंड आई रियली लव दिस वन. दिस अगेन हैज़ द क्रोकोडाइल टेक्सचर डिटेल. ऑफ कोर्स दिस इज फ्रॉम शीन अगेन. एंड ये सब मैंने छोटे वाले बैग्स एक साथ ही ऑर्डर करे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्टाइल करने के लिए. आई मीन इस आउटफिट के साथ ये वाला बैग भी अच्छा लग रहा है. नियॉन एंड लैवेंडर रियली go well together. I mean, I know these bags are not the most practical ones, but they are so stylish, so cute and so trendy. So I mean, so yeah, सारे prices वगैरह, links वगैरह मैं description box में डाल दूंगी आपके लिए. So guys, that was it for today's video. I really hope you guys enjoyed watching this video. If you did, make sure to give this video a big thumbs up. And also, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो, अभी जाके सब्सक्राइब करो. एंड ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन में लेट मी नो इस पूरे कलेक्शन में से आपका फेवरेट बैग कौन सा था. एंड या अपना ध्यान रखो. स्टे सेफ you all, and I'm gonna see you guys next time. Bye.